welcome or welcome back to my channel. So I'm back with another video and this is about makeup, how you can create a simple look at home. So without further ado, let's get started. So here I am taking NY Baker color correcting primer, which I will apply at the areas where I feel I have more open pores so that I can get a perfect canvas to start my makeup base. After this, I am going to use this Swiss Beautica liquid concealer. Shade I'll mention in the description box, which is suitable for medium to fair skin tone. And then I'll use this duo stick in which I have this contour and some highlighter too. So I'll give my face a good structure by using this contour. नाउ आई एम टेकिंग गुड वाइब्स का फेस सिरम एंड मैं इसके 2-3 ड्रॉप्स फेस पे अप्लाई करूँगी इन द एरिया वेयर आई एम गोइंग टू अप्लाई माई फाउंडेशन. सो फाउंडेशन में मैं मेबलिन का फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ दैट इज़ सूटेबल फॉर ऑयली स्किन एंड मेरी स्किन है ड्राई टाइप, इसलिए मैंने वो फाउंडेशन पहले अप्लाई कर लिया है एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करके एंड देन आई विल स्टार्ट ब्लेंडिंग. ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है लाइटर शेड से डार्कर शेड की तरफ. आई मीन सबसे पहले आपको ब्लेंड करना है अपना कंसीलर, देन फाउंडेशन एंड सबसे लास्ट में आपको करना है कॉन्टोर. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई फॉरगेट टू मेंशन हियर, दिस इज सिंगल लेयर मेकअप लुक विच इज सूटेबल फॉर डे फंक्शन. सो ब्लेंडिंग हो चुकी है कंप्लीट और बेस को फिक्स करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज दिस इनसाइड का बनाना पाउडर. सो बेस हो चुका है सेट. अब चलते हैं आईब्रोज की तरफ. इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल और इससे करूँगी फिलिंग एंड आफ्टर दैट आई यूज़ दैट स्पूली टू कॉम माई आईब्रोज. सो लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ करी है कलर बार की पिंक कलर की लिपस्टिक. उसका शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अप्लाई करके इस पिंक लिपस्टिक को उसके ऊपर मैंने यूज़ किया है मेबलिन की एक न्यूड शेड की लिपस्टिक एंड दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बहुत ही अच्छा सा कलर मेरे लिप्स पे आ चुका है और सेम लिपस्टिक को ही मैंने अप्लाई कर लिया है एज अ ब्लश. Now moving towards eye makeup. So for eye makeup I'm using here Maybelline ka gel eyeliner and as I have puffy eyes, for these kind of eyes we should avoid sharp winged eyeliner. Use gel eyeliner, create a small wing and smudge that by using a angular brush or a flat brush. For lower lash line, use darker color from eyeshadow palette from one corner to another corner. At last, I am going to use this highlighter on my cheeks, chin and nose. So this is the look which I have created today. कमेंट करके बताना आपको आज का लुक कैसा लगा एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है so make sure to like, share and subscribe to my channel.